The famous case of Anao. This lady, this girl, this is a famous case of Anna O. And what happens? She saw her father dying. She saw the death of her father. Father was on deathbed. So, after the death of father, she was having a trauma. And the mental trauma started showing her images, hallucinations. She became the patient of hysteria. She became the patient of hysteria. इसके बाद आपको famous case of Dorothy बताना है. Now, see, people started calling her mad or possessed because at the time there were no proper knowledge. Why she started having all of a sudden hysteria? People said that maybe the death of the father, the soul has possessed her, or somehow she has lost her wits, she is mad. Now, this person, this girl was being handled by a doctor. He was actually friend of Freud. So Freud also got a chance to treat the girl. They started looking back about the history of the girl. The history of the girl was that she was very much reserved, introvert, not talking to anyone. कितने लोग introverts हैं? लेकिन टीचिंग में इंट्रोवर्ट रहोगे तो फिर कैसे पढ़ाओगे स्टूडेंट्स को? Change. And not because I'm saying, change. The more you speak, the more you learn. अच्छा बोलोगे तो भी सीखने को मिलेगा, बुरा बोलोगे तो भी सीखने को मिलेगा. Being introvert is good, but not to a level where it is dangerous, okay? What happened? She was an introvert girl, she would not speak to anyone, and when the father died, the trauma got reserved in her brain. She stored the trauma. वो pain, वो suffering, that trauma got stored in the brain. And that started overpowering, that id personality started overpowering her. She would see images, she would have hallucinations, she would talk to her father loudly, sometimes she would scream. So what a case was called case of a mad girl was not a case. Freud came with a theory after treating that girl, the therapy, talking therapy. He just started talking to her about things. About things which is not related to the incident directly. All other random things. Gradually having talking therapy sessions, she started opening up, she started talking, she started expressing, and when Freud found that this is the right time to talk to the girl, they started talking about the incidents related to these things, and they found that she was totally normal. She just couldn't release that pain. She wanted to vent it out, and that was controlling her mindset, the id personality. Now talking therapy is the part of psychiatrists. They use it. They talk to you. They get you involved and they talk to you. And you must have seen people, those who are talking, sometimes they have a ball or they are playing with it. Which is again, your conscious mind is in the ball and the other mind speaks. Another theory that he used here was free association. Theory of free association. Free association. What is free association? The flow of your thoughts, uninterrupted. जो मन में आ रहा है लिखो. Write down what you feel like. Take a paper, pen, write anything that comes in your brain. Anything. Don't be conscious about it's a classroom or somebody's going to read it or they will say, okay, who is this man? No identification. Just let your thoughts be on that paper. Even if they are absurd, meaningless, random, stupid, obscene, aggressive. Kuch bhi ho. Free association also works. This is kind of mirroring. Your mind is mirrored.
आपने अपना माइंड शीशे पे जैसे सामने रिफ्लेक्ट करते हैं, फ्री एसोसिएशन. आई नो इट्स नॉट ईजी, कितना भी डॉक्टर बोलेगा फ्री एसोसिएशन है. मोस्टली इन इंडिया इट इज ऑल्सो केस दैट व्हेन यू गो टू साइकेट्रिस्ट पीपल डोंट टेल देयर रियल नेम्स. If you study this psychology, every 1000 number we need one psychiatrist. ये fact है. इंडिया में तो नहीं है, इंडिया करोड़ों में है. ज़्यादा साइकेट्रिस्ट होते नहीं है, स्मॉल टाउन्स में, गांव में मतलब नहीं होता, और लोग बात नहीं करना चाहते और बताना भी नहीं चाहते. यू जस्ट टेल पीपल दैट हाँ गोइंग टू मीट साइकेट्रिस्ट, टैग लग जाएगा आप पे, अरे पागल पागल है, दूर रहो उससे. What's wrong? We all need psychological support. We all need people to talk. Sometimes you want to speak things you have never spoken. You want to be heard. And then at the same time you want your identity to be safe. This happens. कई बार स्टूडेंट हमें बोल के जाते हैं. So I have also learned this thing that keep the things to you only. बहुत चीज़ें सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है. कई बार हंसी भी आती है कुछ कहानियाँ सुन के. मेरा एक स्टूडेंट था कर्नाटका से. He was very sweet student that I can share with you with no name and all. He said, sir, I have read Rape of the Lock and I see Belinda and I'm in love with Belinda. I told you ना, क्लास में बताया था ना मैंने पहले. वो बहुत इनोसेंट सा बच्चा था, पापा उसके साथ डिफेंस में थे. He said, I have read Rape of the Lock and I have gone through the thorough study. Now I'm in love with Belinda. And I imagine her, I see her. So my suggestion was just a funny suggestion because obviously it was very innocent and I'm not a psychiatrist. So I just said, see, read some other books. Belinda गायब हो जाएगी, Michael Angel दिखेगा. But this happens. Death of a Salesman, when I was reading, I started hallucinating that I really want this man, Willy Loman. I want to hug him. That सब ठीक हो जाएगा, it's okay, all is well. If you read Willy Loman's character, you'll start hating the materialistic life. You'll see that what kind of people we are. Willy Loman is not a great actor or a heroic character. He's anti-hero, a hero without heroic qualities. But his innocence, the way he's innocent, it will make you fall in love with Willy Loman. ऐसे बहुत सारे लोगों के अपने अपने characters होते हैं. बहुत से लोगों को this person, reader, I married him. What's his name? Reader, I married him. Who him? Who is him here? Rochester. Mr. Rochester. बहुत लोगों को पसंद है. Pride and Prejudice में बहुत से लोगों को डार्सी पसंद है. So free association connects. उससे क्या होता है? They'll read your psychology. They'll understand. So in free association ऐसा नहीं होता that मैं कल घूमने गया था. आप बोलोगे कि हाँ गोवा जाना है लेकिन मुझे राखी सावंत पसंद नहीं है, भुजिया अच्छी लगती है. Any reference, no connections. There is no grammatical requirements. There is no proper connections. Just write down what you feel. So maybe in first session, second session, normally people don't write in a proper way, but then they do it. Psychiatrist बनना होगा तो ये काम आएगी थ्योरी. और बहुत सारी थ्योरीज हैं. How many of you have seen that movie शाहरुख खान वाला, डियर जिंदगी? हाँ. So what's new in Dear Zindagi? Nothing new. What does he do? Nothing. Alia Bhatt, the character, she is frustrated with her life. She is bored of it because she is not finding anything exotic. Sometimes even if you're rich, you are living a monotonous life. Same kind of routine, same kind of life. So we all need changes. अब गरीब लोगों को चेंज की जरूरत नहीं होती है. उनको सरप्राइज वैसे ही मिलते रहते हैं. ठीक है, कभी बिजली वाला आ जाएगा बिल लेके, कभी चाय वाला, तो बेचारे वो कम डिप्रेशन में आते हैं. डिप्रेशन अमीरों का खेल है. लेकिन जो बहुत रिच है, दे हैव नो पीपल टू टॉक, एक्सप्रेस, सेम रूटीन. So in that movie, what does he do? He takes her to beach, then sometimes he shows the another side of life. Do things. In fact, if anybody in you is going through this kind of depression thing, plantation शुरू कर दो यार. Plantation नहीं आ रहा तो go to the gardens, see the birds. चीजें चेंज करो. Just change your surroundings. रूम की सेटिंग चेंज कर दो. अगर बुक्स यहाँ हैं, बेड वहाँ है, चेंज कर दो. These things work and everybody goes through this. सब जाते हैं. इसका एक डिसऑर्डर है that I'll teach you through my YouTube videos. When Sushant Rajput committed suicide, the way media was presenting it, it was actually provoking people to go for suicide. खास करके वो लोग जिनको कभी attention नहीं मिला, उन्हें लगा सुसाइड के बाद attention मिलेगा. Suicide is the only way to get attention. इसको एक डिसऑर्डर बोलते हैं. It's a study. I'm missing that name right now. मेरे मोबाइल में शायद पेंडिंग टास्क में है वो वीडियो जो मुझे बनाना है. Let me see if I can just tell you the name.
Okay, shared psychotic disorder अलग चीज है. That is also I have to make a video and I'll teach you here also. Werther effect. That is called Werther effect. Werther effect. There are hundreds of things, so I forget, so I take notes. जो मुझे 2 पेंडिंग वीडियोस बनाने हैं apart from this Werther effect. Another one is shared psychotic disorder. Shared psychotic disorder. What is that? Remember Buradi case? 11 people committed suicide. In Nepal, around 47 plus students committed suicide with their teacher. The monk and the priest, the Buddhist monks and priests, teacher had this strong faith that today is some auspicious particular time, that's a particular moment when all the planets and everything is in an order, and it is something which is divine. In thousands of years this happens, so anybody who dies today will go to God. 47 plus students with the teachers, with the one teacher, jumped in the river. Shared psychotic disorder, mass suicide के examples का part है. What if you are scared? This is also going through right now in your exams. Sit with a student who is scared of exam. 1 घंटे बैठ जाओ किसी के साथ. अगर आप हो तो मत करना ऐसा. 1 घंटे एक ऐसे स्टूडेंट के साथ बैठ जाओ, यार ये नहीं आता, यार वो नहीं आता, यार मेरे से कैसे होगा, यार मैं तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, कॉपी तो देखी ही नहीं है. 1 घंटे बाद आपका माइंडसेट वही होगा, ट्रांसफर हो जाएगी वो चीज़. शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर. अभी यहाँ पता चला जियासरा में शेर घूम रहा है और सबको मारने वाला है. हमें से एक ने पैनिक क्रिएट कर दिया ना, मैं मर जाऊंगा, रोना शुरू कर दिया. शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर सब पे जाएगा. वी हैव 50% डर, 50% कॉन्फिडेंस, लेकिन जैसे किसी एक का डर हमको हावी होगा, हमारा 50% डर 90% में कन्वर्ट हो जाएगा. Muriel Sparks famous work प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी. ये रैंडम एग्जांपल्स हैं, इन बुक्स में से आते हैं. प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी. इसमें डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, डिसऑर्डर से नहीं बोलेंगे क्योंकि शी हैज कंट्रोल देयर माइंड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर. शेयर्ड साइकोलॉजी. The desire of others is your desire. That's the theory by Lacan. Shared psychological disorder. ये इस पेन की क्या कीमत है? What's the market value of this pen? चलो, let's say 20 rupees. Fine. Anybody who wants to buy it on 50 rupees right now? कोई है पैसे वाली पार्टी? Anybody? नहीं ना? लेकिन अगर अभी किसी में से एक ने कह दिया, कार्तिका सेड सर आई कैन गिव 100 फॉर दिस. चलो, कार्तिका कैन गिव 100 फॉर दिस थिंग. नाउ एनीबॉडी? आई गिव 500 और point is, even if it is not having a value, it's you who can increase the value. Especially in exhibitions, what happens? One person goes and says, what kind of painting is this? 5 lakhs. It invokes the emotions of others. Another rich man, अच्छा 7 lakhs. अरे 100 रुपए का नहीं है, वो सरोजनी से उठाया है. लेकिन you have added the price value. You have added the value to that. Easiest example, my dog denies to eat. So how we make him eat? I'll take his food, I'll take the name of another one. Come on, मैं दूसरे को देने वाला, डम्बू को खाना देने वाला हूँ. जैसे I'll take it to my gate, वो भाग के आएगा and नहीं, I'll finish it. पहले it was valueless. The moment I made a value for another one's desire became his desire. No, it's mine. Exhibitions वगैरह में काम आता है, जहाँ पे आपके कोई भी लोग आते हैं, पेंटिंग का एक रेट फिक्स कर देते हैं sometimes and they make you do that. You want to do something? Why? Because others also want it. Success, सबको चाहिए. You are in race. That is desire theory by Lacan. You do not have your own desire.
You do not have your own desire. You have the desires of the others. Others' desire is your desire. Others' desire is your desire. आपका अपना independent desire कुछ नहीं होता. Everybody is running after government job. That's why I'm also running. ये वाली चीज. Others' desire. This is by Lacan. Desire theory बोलते हैं. आता क्लियर है? अब चलते हैं एडवांस लेवल पे. जेक्स लकान, वहां पे फिनिश हो जाएगा. ओके, डोरथी केस. Dorothy murdered her own mother. A simple sober girl, introvert. Dorothy murdered her own mother. Freud got a chance to examine her, and Freud found that just like Anna, she was also an introvert and she was having a lot in her mind. Dorothy case. इसने क्या किया? अपनी मदर का मर्डर कर दिया. She murdered her mother. So, as she was a child, 14-year-old, so she was not taken the custody. But the people, they came to know about these things. So including police, investigators, and Freud. And Sigmund Freud was a big name at that time. So started talking, trying to talk. So what did he do? She would not speak a word. She would stare at him. उसने बात करने की कोशिश की. He tried to talk. She would stare. No word, nothing. Wasting time. 2 घंटे बैठी है, कुछ नहीं बोल रही है. Freud came with an idea. Freud left her in the garden. He said, then lock her in the garden. Leave in the garden. They started monitoring her. In garden, she started plucking flowers and plants. She uprooted many plants. इसने वहाँ पे तोड़फोड़ मचा दी. अब इसने गार्डन में क्या किया? A sabotage. तोड़फोड़. But they didn't say anything. They were like, let her do that. Again, next day, again in the gardens, again destruction, again in the gardens, again destruction. 5th day, they found that now she is replanting, arranging those flowers in order, and now doing constructive work. 5th day. 5 दिन तक उसने अपना गुस्सा रिलीज किया. She released her anger. So, when they found that 5th day was a change, using a small hypnosis. So, na hypnosis. Hypnotized. गांव में होते हैं, बाबा लोग करते हैं. सोना दुगना करने के नाम पे गांव में जाते हैं लेडीज के पास. आपका गोल्ड दुगना हो जाएगा. दिल से दैट ओके, आई विल डबल योर गोल्ड, लेट्स डू. वो तरीके होते हैं. देखो, हिप्नोटाइज भी क्या होता है, ये जो कहने की बात है, जो ऐसा होता है ना, ऐसे करके आपने किसी को कंट्रोल कर लिया, ऐसा ये स्ट्रॉन्ग ब्रेन्स के साथ नहीं होता है. हेलुसिनेशंस और ये सब स्ट्रॉन्ग ब्रेन्स के साथ नहीं होता है. इट नीड्स अ वीक माइंड, वीक ब्रेन, अ पर्सन हू बिलीव्स इन थिंग्स इन ईजी वे. और दूसरी चीज़, समटाइम्स जो पूजा पाठ या ऑफरिंग वो कर रहे होते हैं, उसमें वो कुछ ना कुछ मिला देते हैं ना. समटाइम्स ड्रग्स सिर्फ खा के नहीं जाते ना, सूंघ के भी आ जाती है. तो वो धुएं में कुछ ऐसा कर दिया, यू आर एंजॉइंग दैट. आपको लग रहा है दैट आई एम गेटिंग लॉस्ट. वो बोलेंगे प्रभु की भक्ति में मन लग रहा है. हाँ जी, मन लग रहा है. सो व्हेन यू आर हाई 60-70%, देन दिल से कि अब तुम्हारा गोल्ड डबल होने वाला है, ले आओ गोल्ड. ट्रिक्स है, ठीक है. तो व्हाट हैपेंड व्हेन लाइक शी इज रेडी टू टॉक. सो ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड फाउंड दैट जस्ट लाइक any introvert girl, she was being compared to friends and others. Mother used to compare her for her looks, for behavior, for schooling, for anything. Comparison किसी को पसंद नहीं होता. कई बार तो देखो, इंडिया में तो आदत हो गई होगी आपको. शर्मा जी का बच्चा, पड़ोस वाले को देख, आदत होगी, वो देख नौकरी लग गया है. लेकिन sometimes we don't like it. Sometimes we don't want to be compared. सबका अपना अपना लाइफस्टाइल है. बट व्हाट इफ दैट कंपैरिजन इज causing you inferiority complex and you don't want it, you don't feel inferior, but they are repeatedly telling you. So she came with the answers that her mother used to compare her to other girls
for education, for behavior, for looks, for any other thing. She says that I was different, I was better, but my mother would never understand, scolding me for no reasons. And somewhere it was enough. So when she released her anger, the reason was this edge part, unconscious part. After killing, how do you feel? It was wrong, I shouldn't have done that. When you were killing, why didn't you realize? I didn't know. I just wanted to tell her that I'm not inferior. Stabbing her was my reply that I'm not inferior. That is id part, unconscious. So the crime she did in id part, in unconscious part, she said the stabbing was a reply that I'm not inferior. That's the case of Dorothy. Now let's go for Jacques Lacan. अभी तो बहुत बड़े-बड़े cases आ गए. There is a lady in Australia with a Guinness Book record, 40 plus personalities. 40 plus personalities. There are 3 parts of psychology. According to Jacques Lacan, there are 3 parts of psychology. Psychology के 3 parts होते हैं. Real, symbolic and imaginary. Most important आपके लिए है imaginary. That's most important one. 3 parts होते हैं psychology के. As they're trying to understand the mindset, decode. वो mindset को decode कर रहे हैं. Because when you speak, you're conscious about context. And when you're conscious, you speak what you should speak. You don't speak what you should not. हम सोच समझ के बोलते हैं ना, तो इसका मतलब फेक है. तो ये कह रहा है 3 पर्सनैलिटी के पार्ट हैं. कब कब हम फेक हैं? एंड इज इट कंपल्सरी टू बी फेक? इज इट अ चॉइस? 3 different parts of personality. The first is real, then symbolic and imaginary. If we go by the age, then imaginary comes first. So, right? Real is the last one and hypothetical. Symbolic is your rest of the life. Imaginary, your childhood age. Let's go for imaginary first. Imaginary age सबसे पहले डिस्कस करेंगे. The first one is imaginary, the first age. Now here you have to remember this thing, that imaginary age or stage, imaginary stage कर दो और भी अच्छा लगेगा. Imaginary stage of your psychology, of your mindset, it starts with an infant. Infant, age 0 to. At what age the kids start speaking in a proper way, when they can communicate in a proper way? जब वो बोल सकते हैं that I'm hungry. 3 to 4. ये मतलब इन्होंने मंथ्स के हिसाब से दिए हुए हैं. सो आप यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देना they have given in months, 20 to 30 months. Means when the kid starts speaking. So these are not words, these are lines. When he is able to communicate, he can tell you that he is feeling cold, he can tell you that he is happy, he is sad, he is hungry. तो कहाँ से कहाँ तक की एज है? जहाँ पे उसकी लैंग्वेज स्टार्ट नहीं होती. Once the language started, he is out of that imaginary stage. So 0 से 20 महीने का बच्चा, 30 महीने का बच्चा, 20th month, 30th month. Point is, from 0 to the language introduction, where he starts speaking, there, right?
imaginary stage works. Do we have mothers in our class? Kids, 1 2 3. बच्चे कैसे बात करते हैं? When they have no language. बच्चे कैसे बात करते हैं? जब बच्चों के पास भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लैंग नहीं है, then how do they talk? How do they communicate? बहुत बढ़िया. और सपोज वो चलने लायक भी अभी नहीं है, बहुत छोटे हैं, they are not able to walk and crawl, then if they want milk or feeding, crying. If they are feeling cold, if the flies are troubling, so are they crying because they are sad? This is an acting. बच्चा एक्टिंग कर रहा है. इसलिए जो मेरे भाई का बच्चा है, उसको रोता तो बोलता है एक्टिंग मत कर. आई टेल हिम, मैंने कहा लकान पड़ा है, मैंने एक्टिंग मत कर. मुझे पता है तो दुखी होगी नहीं है, नॉट सैड. व्हाई इज क्राइंग? महंगाई की वजह से, सरकार की वजह से. Crying is a way of communication. So what is crying? Attention. So his learning is that if you want the attention of the mother, cry. Because when mother will come, mother will gradually understand. मदर को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ओके हंग्री है या मक्खियाँ परेशान कर रही हैं, मे बी इट्स कोल्ड फॉर हिम, मे बी उसने जो है अपने कपड़े वेट कर लिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. मदर, he has to call her and this is the best way. हंसेगा तो नहीं आओगे, हंसता रहेगा नहीं आओगे. तो जैसे कि करता रोता है तो तुरंत आते लोग, तो उसको समझ जाता है बहुत जल्दी कि रोने पे ही आएंगे. If you cry, they'll come to attend you. Point is, but can we say that the kid knows what is a mother? Kid doesn't know what is a mother. Mother has a social value. But kid knows that this person, because he can see you. So even he doesn't have any understanding, he knows that this person takes care of me. She is my attendant. He's not conscious about gender. All he knows that if I cry, one person, she's going to take care of me. So until unless he is properly introduced to language, he keeps on crying. Though even after getting introduced to language, he cries. But this crying habit, this comes from this first imaginary communication. He imagines that this is my caretaker, I am safe, and whenever I need any kind of help, I have to cry. So when they go in the lap of some unknown person, they start crying. अब किसी दूसरे ने बच्चे को गोद में लिया, बच्चा सीधा रोना शुरू करता है. And this is really disgusting, the part of culture study. ये एग्जाम्पल उठा लिया किसी ने परफ्यूम बेचने के लिए. देखा नहीं आपने? एडवर्टीजमेंट नहीं देखी? एक आदमी जाता है ऐसे बच्चा गोद में उठाता है, बच्चा रोने लग जाता है, फिर साइड में बैकग्राउंड आता है, ओहो स्मेलिंग परफ्यूम लगाओ, फिर बच्चा हंस रहा है दूसरी परफ्यूम का. कमाल है यार, इसको भी तुम परफ्यूम बेचने के लिए लगा लिया. लेकिन वो इसलिए तो नहीं रो रहा है, उसे मतलब ही नहीं है इससे. ही इज जस्ट लाइक ही इज आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन. मदर इज कंफर्ट जोन. सो मदर के पास कंफर्ट है. व्हेन ही इज इन द लैप ऑफ अदर्स, he is out of his comfort zone, and that's why he cries, because he has lost that comfort zone. So for potential threats, he cries. And जैसे ही मम्मी को देखता है हाथ ऐसे कर लेता है जब वापस जाना है. Or the known ones, when he's growing up, धीरे धीरे he knows some people, so he's okay in the lap of those people. This is complete imagination. He imagines himself as a unit, as an identity. वो अपने आप को एक यूनिट मानता है, that it's me. Another unit is mother, bigger than him, and they are connected. And he imagines that mother is the world. It's his imaginary communication. He imagines and behaves. यहाँ तक समझ में आ गया? Now, as I told you that he's a small unit and she's a bigger unit. How does a kid know that? How a kid knows that he's a kid? अगर mirror ना हो, if there is no mirror, no reflection, you can't see yourself completely. Can you? If there is no mirror, there is no reflection, you can't see yourself completely. आप अपना complete body structure नहीं देख सकते. गर्दन नहीं जाती ना पीछे, नहीं देख सकते ना खुद को. अगर कोई छोटा सा स्टिकर आपको बैक पे लगा देगा तो आपका ऐसे नहीं जा सकता. You can't see that.
So without mirror, how would you know that it's you? In the new historicism, वो क्या बोलता था? Self positioning. Find out who are you, then you go for context. When you are not able to see yourself, how will you know that, okay, this is me? Animal life, जो animal होते हैं, they take time to realize that they have a tail. पूंछ है, उनको धीरे धीरे पता लगता है. So when they are running, उनकी tail कहीं फंस जाती है या कहीं होता है, and they realize, okay, this is also the part of my body. So you must have seen the dogs when they are scared. सबसे पहले अपनी tail आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो बाहर हो तो उसको कोई बाइट कर सकता है. एक बार मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया था, टाइगर की टेल बाहर थी, एंड मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड मैंने थोड़ा जोर से बंद किया, उसको लगी, एंड बाहर आके मेरे गले लग गया वो. उसके बाद अप्रॉक्स 20-25 डेज, जैसे ही वो जंप करे गाड़ी के अंदर, पहले अपनी पूंछ अंदर खींच ले. द मोमेंट ही वुड जंप इन द कार, द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज श्रिंकिंग हिज टेल. He got conscious about that body part also. This is why I'm telling you, because this is the part of mirror stage. A child gets to know about himself when he's introduced in front of the mirror for the first time. Mirror stage. A child finds himself as a body when he sees himself in the mirror. This is called mirror stage. For the first time he finds his identity, that this is me. Because if you can't see your body, then you are the universe. तुम तो कुछ भी हो. But then you realize that, okay, this is me. Then you take care of everything. मेट्रो में जाते हो तो ऐसे थोड़ी था कि एक हाथ बाहर रह गया. You know your body, so you carry accordingly. Mirror stage. Child finds his unified structure. They say that this body is called unified whole. Child finds his unified whole structure. This is me. ये मैं हूँ. Now he has found himself. ये मैं हूँ. The moment you find yourself that it's me, the rest becomes others. Self positioning, new historicism, identity अपनी आ गई. So when he finds himself in the mirror, he realizes that my body is small, my father or mother, the one who is introducing me, has a bigger body. Freud again adds here in Lacanian theory, he says child harbor jealousy. Child यहाँ पे jealous हो जाता है seeing the bigger body of the parents. वो मुझसे बड़े क्यों हैं? Because now he is able to compare. And jealousy is natural. आ रहा समझ में? आप मर्सिडीज खरीद लो, बगल वाला मर्सिडीज का लेटेस्ट मॉडल ले आया ना, तो आपकी खुशी थोड़ी सी साइड में हो जाएगी. नेचुरल होता है थोड़ा. बहुत कम लोग होते हैं इनको फर्क नहीं पड़ता, होता है. चाइल्ड कैसे करता है? कंपेयर करता है. बिकॉज नाउ ही अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ. So he sees the body of the mother, the father, and realizes that his body in proportion is small. उनके संतुलन में, उनकी तुलना में छोटी बॉडी है. He harbors jealousy. बहुत फ्रॉइड का पढ़ना है, पागल हो जाओगे फ्रॉइड को पढ़ के. बहुत डेप्थ में जाता है, बहुत डेप्थ में. He harbors jealousy. क्या क्लियर है? तो यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन है, all those communication, that is imaginary. He imagines himself as a unit and others as a unit. That okay, they are them. But why it is imaginary? Because it doesn't know what is a father, what is a mother, what's my connection with them. He is not having any knowledge. What is the mind of the child? किसने दिया था? Who has given the term? John Locke. Essay concerning human understanding, 1690. His mind is tabula rasa, blank slate, no knowledge. So it doesn't matter what is mother, what is the value of mother. Mother is a goddess. बच्चे को नहीं पता होता. But what does he know? Food, cold, care. And for these things he has to pretend. So he is in his imaginary world, and who is the strongest person in his imaginary world? Mother. Mother is the strongest phenomena in the imaginary world. Mother सबसे strong होती है. Any questions related to this? Mirror stage. They can ask you a question, who has given the theory of mirror stage? Lacan. ठीक है, या 4-5 options आ जाएंगे. When a child comes to know about himself as a unified structure in the mirror stage. या at which point
child gets jealous of the body structure of the parents, or he's getting jealous of others at mirror stage. Because at mirror stage only he has found himself that this is me, ye main hu. So once you have located yourself, you can compare. Point yahan tak clear hai? Now he has been introduced to language. Before language, crying or gestures, all these things were a way to communicate. So I'm repeating once again. बच्चा रो रहा है, इसका मतलब एक्टिंग कर रहा है. क्योंकि एक्टिंग कर रहा है वो, क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए. अटेंशन पे मदर को पता चलेगा कि अच्छा ओके दीज आर द रीजन. सो मदर नॉर्मली क्या करती है? मदर इज नॉट अ ट्रेन्ड मदर. सो व्हाट शी डू? She'll simply maintain the bed, change the dress, or feed again. So she'll do some 3 to 4 required things. Soon she'll understand that okay, all these things are done. Child is okay. वो total imaginary है. He knows that I have to do that. And when this goes till 8th year, 10th year, you have seen kids crying. मेले में जाके बच्चे रोते देखे? झूला चाहिए, आइसक्रीम चाहिए. क्यों रोते हैं वो? नॉर्मली बड़े लोग कब रोते हैं? बड़े बच्चे जब हर्ट हो जाता है. आप लोग कब रोओगे? दुख होगा. ऐसा नहीं रोते सर ने आज क्लास नहीं ली मैं रोऊंगा, या मेले में मुझे ये नहीं मिला. फिर बच्चा क्यों रो रहा है? यही वाली गन चाहिए, यही वाली बारबी डॉल चाहिए. व्हाई इज क्राइंग? बिकॉज दे स्टिल हैव दैट मेमोरी दैट क्राई एंड थिंग्स विल बी डन, मदर विल डू इट. मैंने देखे कई बार बच्चे वो लटक जाते हैं दुकानों पे, यही चाहिए, यही चाहिए, यही खाऊंगा. वो उनका इमेजिनरी स्टेज अभी तक कंटिन्यू हो रहा होता है. ओके, नाउ व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू लैंग्वेज, व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू लैंग्वेज, अरे बहुत पेरेंट्स का पढ़ना बहुत जरूरी होता है यार. पेरेंट्स की पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है. हम लोग छोटे छोटे थे, आई वाज इन 12th क्लास, तो हमारे यहाँ पे एक अमीर आंटी थी. तो उनका जो उनकी छोटी सी लड़की थी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नई जा रही थी. हाँ, रिच आंटी. अरे हमारे समय की उर्मिला मातोंडकर थी वो, ठीक है. नहीं, अभी हैव सीन अंकल्स रोमिंग अराउंड. तो वो छोटे से बच्ची थी, वो सीबीएसई में जा रही थी. तो मैं किसी काम वाम से उनके यहाँ गया हूँ कुछ, तो उनकी छोटी सी बच्ची ने मुझे अब्यूज़ करा हिंदी में. और हाँ, उसने मुझे बिच बोला, मतलब कुत्ती बोला हिंदी में. तो मैंने सोचा आंटी पक्का इसको डांटेंगी. मैंने कहा आंटी इसको डांटेंगी, आंटी इज प्रोफेसर, बच्चा इंग्लिश में जा रहा है, आंटी बोलेंगी. नो, शी करेक्टेड हर, बट शी करेक्टेड द जेंडर. और मैं उसका मुंह देख रहा हूँ उस आंटी का. मैंने कहा ये टीचर है. बेटा नहीं, कुत्ती इज फॉर गर्ल्स, इट्स कुत्ता. आई रियली विश ये आंटी देखे ना ये वीडियो, अभी मेरे पड़ोस में रहती है. एंड दैट किड इज इन इंग्लिश मीडियम नाउ एंड इंग्लिश स्कॉलर है वो. उसको आना भी था क्लास में. उसके सामने भी एक दिन में एग्जाम्पल तो दूंगा ये, द डे शी कम्स इन क्लास. बट शी करेक्टेड द जेंडर. जैसा बच्चे को ब्रिंग इन दो वैसा बन जाएगा. पॉइंट ये है, आपका जो किड है दैट्स लर्निंग फ्रॉम यू. यू आर गिविंग द सिंबॉलिक नॉलेज. लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गया. व्हेन लैंग्वेज गॉट इंट्रोड्यूस, यू आर इन सिंबॉलिक स्ट्रक्चर. So what was the first personality? Imaginary. What is the second personality? Symbols. Now the rest of the life, you are in your symbolic personality. Symbolic देखो क्या चीज़ है. First जो था चाइल्ड, और चाइल्ड का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो मदर से रिलेटेड था. वहाँ तक उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, नीड्स थी. जब वो सिंबॉलिक में आता है तो सिंबॉलिक में फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. लैंग्वेज बनाई जाती है. हाउ द लैंग्वेज वर्क्स? अ टीचर. Who is the teacher? The one who teaches. Who is the doctor? The one who cures. Who is an engineer? So language में words, positions, references, structured language है. So when they are introduced to language in symbolic order, language starts playing the role and the child gets in symbolic age. अच्छा एक बात आओ. What is the identity of a man? What is his fixed identity? Or a woman? चलो दोनों ले लो. बताओ. Identity. This man is a husband. The personality and identity of husband. This is his wife. The only identity they have. What if she is a teacher? Teacher वाला identity है कि नहीं है? Then she is also a sister, a daughter.
Same is like for men. What is your real personality? A teacher, a husband, a son, a neighbor, citizen. If you're in a stock market, then investor. What's your real personality? आप तो multiple role play करते हो. So none of these is your real personality. You are in symbolic personality. When a wife is at home, she behaves like a wife, not like a teacher, right? When she's with her in-laws, with her family members, she behaves like a sister, she behaves like a daughter, not like a wife. Same thing is here. Husband है, अगर businessman है या चलो army में है, तो घर में थोड़ी parade शुरू कर देगा. Means you have your symbolic structures now. You are not in your real personality. Go forward. Who is father? इतना क्या सोचना है? Who is father? दो चीजें हैं, बायोलॉजिकल फादर जिसने जन्म दिया है, या फिर जो समय पे काम. A father in a deed is a father indeed. When you say a father, when you say a mother, when you say a wife, what is the identity of that thing? It has characteristic. You apply the role. पुरानी फिल्में देखी 90s की, हीरो कहता था कि कैसा बाप, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए, तो why should I accept you as father? Because father has social roles. Mother has social roles. So mother has characteristics. When you call somebody a wife, that has characteristic. When you call somebody a friend, anybody who has a friend, you have never seen, you don't know the name of the friend, you don't know the gender of the friend, but you still say you have a friend. है कोई आपका दोस्त अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, you don't know the name, you don't know the gender, you have never seen that person, but you still say you have a friend. नहीं है ना किसी का, क्योंकि friend बनने के लिए there are characteristics you must fulfill. So friend is somebody who is talking to you, who is listening to you, sharing some good and bad memories together, being with you. वही ना, उसमें फिर आप एक best friend कर देते हो. So what if there is a friend who is not like a friend? Will you call that person a friend? What if the teacher is not a teacher, he is an engineer? Will you call that man a teacher? या डॉक्टर घर पे आए और आप डॉक्टर को आते ही बोल दो कि हाँ सर वो हार्डवेयर वाले आ गए हैं, मैकेनिक आ गए, डॉक्टर नाराज हो जाएगा. आपको बोला अरे सर बॉडी भी तो ठीक करता ना, मैकेनिक तो हो, नहीं मानेगा. हु इज द डॉक्टर? द वन हु डज हिज सोशल रोल्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? These names have no meaning. These names have social roles. Acha, what is the social role of a mother? I don't have to define it, right? पता है ना सबको? You know what is the role of social role of mother? So we have many names for mother. आप अम्मी भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं, माताश्री भी बोलते हैं, माताजी भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते होंगे, माँ भी बोलते होंगे. सीधा रोल चेंज होता है, नेम चेंज होते हैं ना. कोई और नेम चेंज कर दो, रोल रहेगा या नाम रहेगा? विच इज फिक्स? रोल इज फिक्स. So these names are symbolic. Roles are important. The one who plays that role, we give the name. So sometimes we find other aunties who are really sweet to us. So we say na that you are like my mother. You're just like my mother, sir. So in short, when the child is introduced to language, he finds himself in a social context. वो अपने आप को समाज में पहचानना शुरू कर देता है. And then all the symbolic roles start. Tell me one role which is not symbolic. बताओ. I'm a teacher, I'm teaching. I am called as a teacher because I do that teaching things. Give me one name you are in contact with who is not having a symbolic identity. Stranger is the having symbolic identity of stranger. You will not use the word stranger for your friends, for your relations. Nahi na. Stranger is for stranger, that has quality. Then, give me one name जिसमें symbolic identity ना हो. God has symbolic identity. God के characteristics पता है हमें, हमारी मदद करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं. 90% लोगों को God पैसे और सक्सेस के लिए कनेक्ट लगते हैं. If a God clearly says, if you read a book, a theological book, and in theological book it's clearly written that this God will never give you success, never give you money, because he wants you to work hard, then you will never go to the temple of that God. That God will have no value. इंद्रदेव की कितने लोग पूजा करते हैं अलग से?
वरुण देव की कितने लोग पूजा करते हैं? वी आर नॉट फार्मर्स हियर, सो वी डोंट वांट रेन. तो वरुण देवता की हम नहीं पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा हम नहीं कर रहे होंगे. किसान करते हैं, कई बार प्रसन्न करते हैं, बारिश हो. सिंबॉलिक गॉड्स हैं. सबसे ज्यादा पूजा लक्ष्मी जी की होती है. लक्ष्मी जी की होती है. सरस्वती जी की पूजा अलग से देखी है. एक सरस्वती मंत्र के अलावा ज्यादा लोग जानते भी नहीं है. या देवी सर्वभूतेषु, वो वाला है ना? कौन सा है? कौन सी प्रार्थना है सरस्वती जी की? या कुंदेन्दु तुषार हर धवला. मैं ये देख रहा था, या देवी सर्वभूतेषु कितने लोग हाँ करते हैं. ओम बुर्व सब भी हाँ कर सकते हैं. दिस इज द पॉइंट. इफ यू हैव योर एग्जाम, सरस्वती माता की पूजा हो जाएगी. वैसे पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा होगी. गॉड्स आर हैविंग सिंबॉलिक आइडेंटिटी. पहलवान हनुमान जी की पूजा करते हैं. मसल थिंग हैव बीन कनेक्टेड टू, पावर हैज बीन कनेक्टेड टू दुर्गा माँ. और मकान, बिल्डिंग, घर, कौन से गॉड है? धनवंतरी नहीं, विश्वकर्मा. विश्वकर्मा. वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पे छोटे छोटे मकान बनाते हैं ईंट से. हाँ, मम्मी बना रही थी मेरी, जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ना, तो मम्मी ने से बनाया. तो मैंने कहा मम्मी जब मांगना ही है तो 2-3 फ्लोर और बना दो. जब मांगना ही है तो फिर इतना ही क्यों मांगना है? मैंने कहा 2-3 फ्लोर और बना दो. वैसे अभी तक तो मिले नहीं, देखो कब सुनते ही पता. वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है, तो शी हैज टू सी एवरीबॉडी. बट गॉड्स आर ऑल्सो सिंबॉलिक, सिंबल्स. सो यू आर सराउंडेड बाय सिंबल्स एंड यू आर इन अ सिंबॉलिक लाइफ, राइट? ठीक है, तो यहां पे भी आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, इन सिंबॉलिक पावर स्ट्रक्चर, व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, द पावर स्ट्रक्चर बिकम्स फादर. जब छोटा बच्चा है, 6 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर और मे बी 15, where he is introduced to the language and getting used to of the society, he is trying to understand society. Power structure is not mother. Now the father becomes power structure because of patriarchy. So he realizes that father has controls the governance of the house. Father has the money. Father is the source of. Father has more social understandings, and father is more socially connected. Mother का क्या है? Seeing patriarchy, women are not that much connected. या अगर हम पुराने बातें करें पुराने लोगों की, तो women they were not allowed to go out that much where the father would go. तो नॉर्मली बच्चे को बाहर कौन घुमाता है ज़्यादा? छोटे छोटे बच्चे देखा ना, पापा के साथ साइकिल पे, बाइक पे, हम जाएंगे, मार्केट जाना है, तो बच्चा फादर के साथ ज़्यादा मार्केट जा रहा है या 10 जगह जा रहा है, उसको ज़्यादा एरिया दिख रहा है. सोन ही रियलाइजेज दैट मदर ओबेज फादर. दैट्स द रेफरेंस ऑफ पेट्रियार्की ऑल्सो. एंड द अटेंशन शिफ्ट्स टू फादर. यहाँ पे पावर स्ट्रक्चर कौन बन जाएगा? फादर. बट अगेन दैट इज नॉट स्टेबल. इट्स नॉट स्टेबल. He'll get this age 30. He himself is earning. He's not the father is not the power structure now. Who is the power structure now? खुद है वो. अपना, उसको अपने पावर का पता है. यहां तक क्लियर है? Now the real personality. The real personality. Real personality, according to Lacan, is hypothetical, cannot be attained. In life, real personality cannot be attained. Only 2 situations are there where somehow they say that okay, in these 2 particular situations, real personality can be attained, or one can be in his real personality. 2 situation ऐसी हैं जहाँ पे आप real personality ला सकते हो. Real personality. When you are not even born. So when you are not even born, you are in the warm, the ideal state, heavenly state. You are not the part of social structure. You are not the part of social context. Then you are being fed. You don't have to communicate. The body knows what it should do with you, but mother's body is like that. So you are in the ideal state. There you have real personality.
There you don't have to pretend, there you don't have to communicate accordingly. This is your real personality. But this is hypothetical. यहाँ तो literature का मतलब ही नहीं है. तो ये तो वो extreme situation है which is not even required. Because now this is not the part of our study. Second one, where you can be in your real personality, connected to extreme truth, dangerous truth. Because they believe in this thing that we are all manipulating. Nobody speaks truth. So they say that the deathbed, टाइगर 3 देखी देखा ना, मैं देखा है. उसमें एक लाइन है, कैटरीना कैफ कहती है ना, मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता. वही तो लाइन है, ये तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था. डेथ बैड. मैथ्यू आर्नोल्ड क्या बोलता था? ट्रुथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन. विच बुक? सोहराब एंड रुस्तम. कहां से लिया गया रेफरेंस सोहराब एंड रुस्तम का? फिरदौसीज शाहनामा. बहुत बढ़िया. Truth sits on the lips of dying man. Even in this movie Tiger 3, when Salman Khan wants to trust someone who spoke certain lines and died, Katrina says, yes, a man who is dying never lies. अब देखो point. Deathbed. But again there are questions. How many of you believe in this thing that people, those who are having the deathbed, are 100% sure about their death? We all have hopes. We all believe in miracles. किसी को विश्वास कैसे होगा कि हाँ मैं सच में मर रहा हूँ, वो भी नेक्स्ट 10 मिनट्स में? विश्वास दिलाना भी तो मुश्किल है, और उसमें भी कंडीशंस हैं. वी आर ऑल ऑन आवर डेथ बेड. हम सब हैं उस पर, क्योंकि हमारा नंबर लगेगा, कभी ना कभी तो लगेगा. वी आर गोइंग टू डाई. बट द फीलिंग दैट ओके, बट वी डोंट नो व्हेन. सो टिल देन लेट अस बी इन सिंबॉलिक लाइफ. This is questionable. How to question, how to prove it that okay, somebody is in real personality because he knows that deathbed is there. He is almost dying. ये भी confirm नहीं है. जो हॉस्पिटल में है incurable disease के साथ, डॉक्टर अगर उनको बोलेगा you have 1 month, तो 1 month में you are left with 1 month. कितना सच बोल देंगे 1 month में? They can speak the truth when the doctor confirms that last 10 minutes, जो बोलना है बोल लो. There we can say that okay. But if you're left with 1 month, सोचो किसी का लास्ट मंथ बाकी है मरने से, और वो बड़ी बड़ी कन्फेशंस कर दे पुलिस के आगे. अरे मैंने ही बैंक लूटे थे, मैंने ही मर्डर करवाए थे बहुत सारे, तुम कभी पकड़ नहीं पाए मुझे. 1 महीना बाकी है, तब तक एक विदेश से डॉक्टर आता है, वो बचा लेता उसको, कहता ये लो दवाई मिल गई है. अब क्या होगा उसका? गया. तो why would you tell the truth when you are not sure about the last 10 minutes? So that is again hypothetical. That's again hypothetical. No guarantee that people, and then we are God fearing people. हम religious लोग हैं, तो मरने से पहले लोग ऊपर वाले का नाम लेते हैं. लोग अपने सिंस नहीं कन्फेस करना चाहते, कई बार नहीं बोलना चाहते. मरता हुआ आदमी बोलता है ना, बड़े से डब्लू के नीचे पैसा रखा है. पुरानी फिल्मों ने प्रमोट कर दिया इसको, मरते मरते वो सच बता के जाते. Did you get it? This was your theory, psychoanalysis theory.